Okay, so we were studying collection. Okay, so next we studied two type of collection, list and set. Okay, now I'm going to teach you last type of collection, that is map. Okay, we can use map. What is it? We will study it. So till now we studied what is list, how can we create it, what's set, how can we create it, difference between list and set. Okay, now I'll teach you what is map and we use it and how can we create it. Okay, so what is map? If you want to store the information in the form of key and value pair, that time you can use map. If you want to store the information in the form of key and value, so that time you can use map. Okay, so if you are storing the information in key form and value form, so what you will write on key side, which type of value you can write in key side, and which type of value you can write on value side. Okay, so whatever you are writing on key side, it should be unique. Key should be unique. It should not duplicate. Okay, so key should not be duplicate, but value can be duplicate. Okay, so value you can write duplicate value, but whatever you will write on key side, it should be unique. If it is not unique, you can't write it. Okay. Okay. So next, how we will declare the, you can say, list. Sorry, how we will declare the map. Okay. So we studied the list. The, you can say, tag are similar to the list. First, we will write map of data type, then map variable name is equal to new map of data type. Okay. But here we have to enter key as well as value. Okay, we have to enter key and value. So we will use two data type. So map of key and value. Map of key and value. Okay, write map name, or you can say reference variable name, then new map of key and value. Okay, so it's the syntax to create the map, to declare the map. Okay, but key and value you will enter here, but you have to write the data type of the key. Okay, whatever the data type of the key, that data type you have to write. Map of integer, like that, map of string. Okay, and whatever the, which type of value you are storing. Okay, so if you are storing string type of value, you have to write the data type of the value. If you are storing integer type information, write the data type of that value. Okay, for integer, write integer data type. If data type of value, key data type, value data type. Here you will write key data type, value data type. Okay, so it's the complete syntax. Okay, now what I'm doing, I'm going to create one. Just
Okay, so I'm going to create one class and I'm going to create the map. So map example. Okay, I'm going to create one method, public void, write any name. Okay, so here I'm going to create one map. So first I'll write map of data type of the key. So I'm writing integer, then data type of the value. And on value side, I'll store string type of information. So I'm writing string. Write map name. First map is equal to new map of key data type. So key data type is integer. Then we have second value data type. Value data type is string. Then save it. Okay. So is there any value in map or not? Till now, is there any value in map or not? No, sir. No. Okay. Now what I want to add the value in map. How can we add it? With the help of put Put function. put method. Put method. ठीक है जिसने मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ that time I ask that question. If I want to add the value in list, so which method I'll use? Add method. Add Add method. If I want containing to, map. yeah, if I want to add any elements, any value in map, so which method I'll use? Put. Put method. So we will use put method. ठीक है आपको वो भी बता दूं कि कितने परसेंट मुझे सही आंसर आता है कितनी परसेंट गलत 60-70% गलत ही आंसर आया है जिसका मैंने और इंटरव्यू आप और आपको यहाँ पर से सही आंसर। ठीक है याद रखना ये भूल जाते हैं मतलब सबको लगता है मैप में भी ऐड ठीक है इन मैप वी यूज पुट मेथड ओके नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द वैल्यू सो राइट द मैप नेम डॉट पुट list name dot add map name dot put okay so when we will use the put method which in map which type of information we can store integer and string type ठीक है जब भी हम वैल्यू भेजेंगे डेटा भेजेंगे सो वी विल पास द इंटीजर वैल्यू एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यू ठीक है तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखनी है ठीक है तो विदाउट कोट एनी नंबर यू कैन राइट देन कॉमा आफ्टर इंटीजर कॉमा देन यू हैव टू राइट द स्ट्रिंग वैल्यू ओके वन कॉमा नेम so it's a way to add the value okay now I'm going to add the value in map okay I'm writing name okay so I have added 5 value now I want to check the size of the map how many values are available in map ठीक है I want to check the size of the map how many I want to check the count how many values are available in map so we will use same method which we were using in list and set size method with the help of size method we can check it okay so first I'm going to debug
map system dot debug map information plus writing the map name, first map. Okay, then I'm going to print the size also. System dot debug map size. How many values are? Write the map name, first map dot size, and going to save it. ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट मैप डॉट साइज लिखा है ये ऐसे स्मॉल में लिखूं कैपिटल में लिखना है? व्हाट इज द Small. स्मॉल करेक्ट? पे स्मॉल पे स्मॉल को लॉक कर दूं? Yes. रीजन? So this is the method and that will be in the lower kernel. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू debug it. Click on execute button, click on debug only, and we can see the output. Map information. So whatever the name I have entered, it's coming 1, 2, 3, 4, 5. Then map size 5. Okay. So any doubt till here? नो सर समझ में आया अभी तक तो? Yes, sir. गुड। ठीक है, अब वो लेट सपोज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू क्रिएट सेकंड मैप। एक बात और पूछनी थी या shall I need to write the definition of the method also, or it is okay? ओके सर नो नीड टू बी राइट Yes, sir. No need. Okay, so I'm going to create the map, second map of integer comma string, writing any name, second map is equal to new map of integer comma string. Okay, and I'm going to add the, you can say, records. Okay, I'm going to add the records in this map. So I'm using put method and e6, and I'm writing other name. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Okay, now again I'm going to print it. I'm going to print the second map. So what will be the size of second map? What will be the size of second map? 5 5. 5. Okay, so I'm going to debug it. ठीक है, clicking on execute button, checking the output.
Okay, we are getting same out, means unique output size 5. Okay, we are ready. Now what's the requirement? What's my requirement? I want to Sir, add. हाँ. oh, nothing. Okay, nothing. Nothing. Okay, Okay. this is the same method. Okay, ठीक Okay. So what's the my requirement now? I want to add the second map value in first map. Okay, all the 5 values which are in second map, I want to add it in first map. So how Put can we all add? function. Put all, sir. ठीक है. Before that, I'm asking if I have one list. Okay, and I have two lists, list 1 and list 2. So all the values of list 2 I want to add in list 1. So which method I will use? Add all. Add all. या ठीक है, हम ऐड मेथड एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अगर आप किसी लिस्ट को ऐड करना चाहते हो दूसरी लिस्ट में, तो विच मेथड यू विल यूज? ऐड ऑल. ठीक है. सो इफ यू वांट टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैप इन अनदर मैप, which method you will use? Put all. Okay, so next method is put all. Then you have to write the map name. I'm going to use it. Okay, so in first map I want to add. Okay, now if I'll print first map, if I'll print first map, so what value I will get? How many values I'll get? 10. 10. Okay, map information, first map, size. Okay, I'm going to debug it. Then we will check how many values I'm getting. ठीक है, 10 वैल्यू आ रही है, सारी सारी वैल्यू ऐड होगी मैप के अंदर. ठीक है, ये समझ में आया सभी को? हाउ कैन वी ऐड द मैप वैल्यू इन अनदर मैप? सर इसमें प्रिंट के बाद लास्ट में डॉट 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 क्या मतलब है? आई मीन हम और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं या फिर? इसमें मतलब कंप्लीट, तो वो कंप्लीट डेट जब ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं ना, तो वो डॉट डॉट ही दिखाता है. मतलब कि 10, शायद 10 या बट इसमें तो 15. पूरे आए हैं. हम्म. मैप का देखो, मैप लिस्ट भी, लिस्ट चैन. कैन Yeah. यू म्यूट योर सेल्फ? या शर्मा जी, कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? नो सर। मतलब कि वो बताओ. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट. ठीक है, एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? एरे और लिस्ट में हम्म. तो बेसिकली डिफाइनिंग द एरे. So basically, array can be stored the continuous location, but onto the list you can store into the dynamic. हम्म. And um, and if we talk about the the there is no method in the array, and the list there are so many methods like to add. And ये सब अभी तो यही आ रहा है दिमाग में एकदम ठीक है, से. मतलब एरे का जो साइज है वो फिक्स होता है. हाँ, एरे का साइज फिक्स हाँ, होता है, इसका साइज लिस्ट फिक्स का नहीं नहीं होता होता. ये. हाँ. हाँ जी हाँ. ठीक है, ये मेन डिफरेंस तो यही है ना. हाँ जी हाँ जी हाँ. हाँ. देखो, जो कलेक्शन जो होते हैं ना, इनका साइज फिक्स नहीं होता है. ठीक है प्रीति मैम, कि ये नहीं कि 10 एलिमेंट ही हमने एंटर करें तो 10 ही साइज हुआ उसका. साइज फिक्स ही नहीं है. हम्म. ठीक है, वो मतलब अपने आप ग्रो हो सकते हैं अपने आप. ठीक है.
तो वही है कि साइज इसका मैप का कुछ फिक्स है नहीं। ठीक है, इसलिए इफ यू वांट टू ऐड मोर वैल्यू यू कैन ऐड इट। ये डैश डैश इसलिए आ रहा है। सर लिस्ट कंसोल में नहीं आता ना ये? आता नहीं, मतलब कि लिस्ट में अगर ज्यादा वैल्यू होंगी तो उस टाइम भी डिस्प्ले होगा। ओके सारे सर। कलेक्शन में डिस्प्ले होगा लिस्ट सेट मैप हर में। ओके सर। ठीक है, बट एरे में डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सो नाउ puts, okay, put method done, put all method done, size method done. Okay, now another method is clone. If you want to copy all the values of the map, you can use clone method. Okay, so we have one map. Map name is trip member. And what I want all the member information in this variable trip member with ID and name. Okay, with ID and name. So all the employee information are in first map. I'm going to clone it. Okay, I'm going to use the clone method. Okay, when I will print it, what I will get? I'll get same information. Okay, okay, so we can clone it. Next example, what I want, we have map. Okay, we have one map. I want all the values of the map. You can say I want to, सर huh, सर आपने 30 लाइन में ये लिखा है कि लाइक मैप क्रिएट कराने के बाद फर्स्ट मैप डॉट क्लोन, तो क्या ये ट्रिप मेंबर में की वेरिएबल की नई मेमोरी क्रिएट होएगी कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? मैप ऑफ स्ट्रिंजर स्ट्रिंग ट्रिप मेंबर। ठीक है, हम रेफर कर रहे हैं सिर्फ। तो मतलब मेमोरी क्रिएट होएगी कि नहीं नहीं ट्रिप होएगी, मेंबर नहीं होएगी, वेरिएबल में? नहीं ही होएगी। तो मेमोरी क्रिएट ना होएगी तो ये स्टोर कैसे हो जाएगी उसमें ये वेरिएबल में मतलब कि ट्रिप? मेमोरी कहीं और क्रिएट, जो फर्स्ट मैप है ना। जी। हम्म। ठीक है, ये कोड, गो बैक टू द कोड, प्रिंट। ठीक है, हमने क्या किया कि एक मेमोरी क्रिएट करी, न्यू मैप ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है कि हमने एक मेमोरी क्रिएट करी है जिसमें हम स्ट्रिंग इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या नेम है? फर्स्ट मैप। ठीक है, नेम क्या है? फर्स्ट मैप। जो फर्स्ट मैप है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है। इट विल रेफर टू द मेमोरी। फर्स्ट मैप इट्स द रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये रेफर करता है मेमोरी को, रेफर टू द memory. We will not store the data in first map, okay, but we will refer to the memory. जैसे ही मैंने लिखा कि मैप ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग ट्रिप मेंबर इजकल टू फर्स्ट मैप डॉट क्लोन। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इस वाली मेमोरी को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रिप मेंबर है, जो वेरिएबल है, उसको रेफर कर रहा हूँ इस लोकेशन पर। ठीक है, तो ट्रिप मेंबर को मैंने इस लोकेशन पे रेफर किया। जैसे ही मैं रेफर करूंगा, जो भी डेटा है इसके अंदर वो, ठीक है, उस डेटा को मैं रेफर कर रहा हूँ, तो वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। फर्स्ट मैप को जब प्रिंट कराओगे सेम डेटा,
ट्रिप मेंबर को एग्जीक्यूट कराओगे, वो डेटा जो भी है वो डेटा डिस्प्ले होंगे। तो मेमोरी एक है, ठीक है, हम रेफर कर रहे हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल एंड विद हेल्प ऑफ मल्टीपल वेरिएबल तो यू कैन रेफर इट। तो एक टाइम पे एक ही तो वेरिएबल को रेफर कर पाएंगे वैल्यू कि दोनों कर पाएंगे? एक क्लास के आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं एनोनिमस विंडो में। हम्म, हाँ। ऐसे आपने क्रिएट किए मल्टीपल एक क्लास के, हम्म, किए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एफ ई रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। तो न्यू मैप एग्जांपल से हम न्यू मैप एग्जांपल लिखते हैं पहले। न्यू मैप एग्जांपल, ठीक है, न्यू मैप एग्जांपल से मेमोरी क्रिएट करी तो हम रेफर कर रहे हैं। ठीक, आप मुझे, यू प्लीज गिव मी सम टाइम, इट्स अनदर टॉपिक, आई टीच यू इन डिटेल। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये चीज समझाना, इसको भी पेंडिंग रखो। ओके। ठीक है, क्योंकि फिर मैप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Maybe if I'll get time today, I'll teach you. Okay, else I'll teach you tomorrow. ओके। Okay, next, what I want in map, I have key, means I have a key, and in another side, I have value. What I want all the key. I want to take all the key from map. So, which method we will use to take the key? Okay, so we will use get method. Sorry, we will use key set method. So we will use key set method if you want key of the map. So you can use key set method. Okay. So simple, write the map name on dot key set. So what you will get all the key. ठीक है, अब की किस टाइप की मिलेंगी आपको, कितनी कीज मिलेंगी, हाउ मेनी की यू विल वन से गेट। लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वैल्यू मिलेंगी। सो वेयर यू विल स्टोर इट, विच टाइप ऑफ वेरिएबल यू विल क्रिएट टू स्टोर द वैल्यू। इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, ये है ना मैम से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है ना, हिना मैम, सर। हमारे पास एक ट्रिप मेंबर है, ठीक है, ट्रिप मेंबर में 10 की हैं, 10, ठीक है, की हैं 10 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 10 वैल्यू है, ठीक है, कि 10 आईडी हैं एम्प्लॉय की और 10 एम्प्लॉय के नेम है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी आईडी को निकाल रहा हूँ, ठीक है, आईडी को दूसरी जगह स्टोर कर रहा हूँ। अब मुझे 10 आईडी स्टोर करनी है, तो किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँ, लिस्ट ऑफ आईडी। लिस्ट ऑफ आईडी। आईडी जो है वो इंटीजर टाइप। अच्छा, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, अब अदर पार्टिसिपेंट्स वो बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। सर श्योर नहीं, बट मेरे को लगता है कि इंटीजर एक वेरिएबल में हो जाना चाहिए। यस सर, इंटीजर ही होगा आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सेट ऑफ लिस्ट सब सर ऑफ क्योंकि की सेट हो गया ना तो सेट में तो पूरे आ जाएंगे। ठीक है। ऑफ इंटीजर। दोनों से ट्राई कीजिए सर, देखेंगे क्या सही। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, सर कलेक्शन हम और कभी भी इंटीजर। इधर। अच्छा अच्छा कलेक्शन अच्छा। इंटीजर, कलेक्शन और इंटीजर दो बोर्ड चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू प्रीति कलेक्शन। मैम, इंटीजर, एंड अकॉर्डिंग टू हिना मैम, कलेक्शन, कलेक्शंस। कलेक्शंस।
ठीक है, दोनों से जी ट्राई सर। करके देख। चलो ठीक है, पहले इंटीजर से ही कर लेते हैं। इंटीजर a इक्वल टू, going to save it. Okay, here I'm getting asterisk mark. Now I'm going to save it. Saving, again I'll get same. ठीक है, same symbol I'm getting. I'm getting the problems. Now we will check the problems. Illegal assignment from set to integer. ठीक है, यहाँ तो एरर आ गया। अब इंटीजर किस बेसिस पे बता रहे हो आप? सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर किस बेसिस पे बताया था आपने? मिश्रा जी और प्रीति मैम, कुछ आइडिया? फिर सिंपल था, मेरे को लगा कि पूरी वैल्यू स्टोर करनी की तो इंटीजर डेटा ऊपर था की का, तो ये ले सकते हैं। हम्म, लेकिन 10 वैल्यू आएंगी ना, 10 आईडी आएंगी, 10 की 10 सिमिलर टाइप की हैं। सर जैसा आपने बताया मैंने इस तरीके का नहीं सोचा था ऑर्डर ऑर्डर फॉर्मेट में होगा। कि सर मैंने तो ऐसे हम्म, सोचा था जैसे की और वैल्यू हम्म, पास कराते हैं ना कोमा करके, मैं उस तरीके से सोच रही थी। ठीक है, चलो लिस्ट बना के देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ इंटीजर, हिंट लिस्ट, गोइंग टू सेव इट। ठीक है, अगेन आई गेट सेम एरर, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम सेट टू लिस्ट। ओके, कि ये यूनिक होएगी, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट दिस सेट। सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, नाउ आई एम एबल टू सेव इट। ओके, नाउ व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? आई वांट टू स्टोर all the employee name in one variable. In map, I have ID as well as value. What I want value only. I want employee name and I want to store in one variable. So which type of variable I will create to store the employee name? लिस्ट ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग। ऑफ स्ट्रिंग। List of string। तो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यस सर, एम्प्लॉय नेम लिस्ट है, ऑफ स्ट्रिंग। मैप के अंदर से एम्प्लॉय नेम निकालने हैं हमें सारे। ठीक है, और वो स्टोर करने के वेरिएबल में। तो किस तरह का वेरिएबल क्रिएट करेंगे? Which type of variable we will create? सर सेट लेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं लेंगे, सेट ऑफ स्ट्रिंग लेंगे सर। कोई अगेंस्ट है मिश्रा जी के? सेट क्यों लेंगे, लिस्ट ही लेंगे ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही लेंगे। लिस्ट ऑफ यूनिक स्ट्रिंग। थोड़ी ना। मैप में क्या होता है ना कि डेटा इंडेक्स वैल्यू में असाइन नहीं होता, यूनिकली डिफाइन नहीं है, तो इसलिए सेट लेंगे। सेट लिया गया है फॉर कीज के लिए, तो वैल्यूज के लिए भी नहीं, सेट हम लेंगे। हम आईडी से वैल्यू निकाल सकते हैं बट वैल्यू से आईडी थोड़ी ना निकाल सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे, मेरे को लगता है सेट होना चाहिए। बाकी सर बता। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट डुप्लीकेट ले सकते वैल्यू। हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है सर सर। बट लिस्ट कंफ्यूजन ऑफ है क्या स्ट्रिंग सर? होएगा। ठीक है मिश्रा जी, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, सेट में पॉसिबल है ये? नहीं सर। तो फिर बचा ऑप्शन क्या है हमारे पास? लिस्ट। लिस्ट। ओके, सो इफ यू वांट values of map, so which method you will use? You will use value method. Okay, it will return the value of the map. And if you want key, so you can use key set, it will return the key of the map. Okay, so I'm going to write trip member map name dot values, going to save it. Okay, and we have to store the information, so I'm going to create one list. Which type of list? String type of list. And in this list I'll get employee name, so I'm writing it. Okay, now I'm going to debug it. So system dot debug,
एम्प्लॉय आईडी, सिस्टम डॉट डिफॉल्ट, एम्प्लॉय नेम। ओके, किसी को कोई डाउट है इनमें, वैल्यूज और की सेट में? देखो, एम्प्लॉय ना आईडी 1 2 3 5 6 10 एंड नेम। ना सिस्टम डॉट डिफॉल्ट में हमने एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी लगा। सर आप ये कर रहे हो ना, ये जो खाली लिस्ट है, खाली मैप है, उसमें डाल रहे हो वैल्यू। तो सर इसको हम दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, पुट ऑल करके